Good morning, students. We are going to teach you today the effect of change of pressure on the three states of matter. Mainly we will be studying here the states of matter, that is a gaseous state. What will be effect of change of pressure? But let me recap the previous class. I taught you the sublimation. Sublimation is a process in which solid is directly converted into the gaseous phase without undergoing to the liquid. Is known as sublimation. But when gas is directly converted into the solid, and this process is known as deposition. So children, these two work we did it in the previous class. Now let me discuss it. Further related to that, one more questions. Effect of change of pressure. Now look at this answer. Why solid CO2 is also known as a dry ice? We will come to know the answer of this. Now take the three cylinder. Cylinder number A, B, and one more cylinder, you take it. Take one more cylinder. And this is cylinder number third. It is cylinder number third. Whatever, here I am putting a piston over there. And it is your piston. Now here see the molecules, the gases are like this. Obvious, it is the same amount of gas is in the first cylinder A, B and C, and same amount of gas is in three cylinders. It is a piston. Now you are applying the pressure over here. Physical state of matter is governed by the molecular space, the space between the molecules, intermolecular space. As we decrease the molecular space, distance between the molecules, by increasing the pressure, the physical state is changed. Here it is a gaseous state, gas, liquid and solid. Same amount of gas is there. Pressure, we have increased the pressure in this, it has converted into the liquid. Further, we have increased the pressure, it is converted into the gas. By increasing the pressure, the liquid, by increasing the pressure, gas can be converted into liquid and liquid can be further converted into the solid with decrease in temperature. How the phase transformation takes place is, why? There was the question, why solid CO2 is known as a dry ice? Why? It is because due to increase in pressure, the CO2 gas is directly converted into the solid CO2. CO2 gas is directly converted into the solid CO2 without undergoing into the liquid phase. But when we decrease the pressure of solid CO2, the solid CO2 is directly converted into the gaseous CO2 and it does not undergo to the liquid CO2. Solid CO2, directly converted into the CO2 gas with decrease in pressure, that's why it is known as dry ice. That's why called dry ice. We have discussed on this part
Why CO2 is known as dry ice? What is the effect of change of pressure? In this point we have discussed you, with increasing pressure the intermolecular distances decreases and the physical state changes. Now we will further discuss the phase transformation. How the phase transformation, liquid to the solid to the gas, what are the process? See, solid, liquid, gas. Now what are the processes are there? Now you need to do that. Solid to the gas conversion. What do you name the process? Sublimation. Sublimation. Gas to the liquid, condensation. Liquid is a solid, liquid is a solid, freezing. Freezing. Now reverse. Liquid to the gas, here sublimation. Now gas to the solid, and now solid to the liquid, fusion. And then liquid to the gas, evaporation. Liquid to the gas is evaporation, and then all over, and then gas to the solid is deposition. Deposition or deposition. So these are the three interconversion. Question is, explain the process of interconversion of three states of matter. Three states of matter. State the process of interconversion of three states of matter. Solid to the liquid, that is solid to liquid and to gas, and reverse of it. So children, the question I have given you the three state of matter, that is solid to the liquid, liquid to the gas, and reverse of. What are the process? Solid to the liquid, it is a fusion. Liquid to the gas, it is evaporation. And gas to the liquid, condensation. And liquid to the solid, freezing. So all three conversions, you can do all that, all three states of matter. We have already done it. You can see the process. And we have shown you the effect of change of pressure on the state of matter. This point we have discussed it, but today our major topic is to explain you the process of evaporation. Please write it and we will do the exercise questions. Now refer to page number 9.
Refer the page number 9. In-text question. Question number this. In-text question. Question number this. 1, 2, 3, 4. I am going to answer it all the questions. Please see. Write it. Also take from NCERT PDF if you do not have book. I will discuss all the question answers, and then later on we will go to the evaporation in today's class. First question, convert the, इस पर रख दो कि हम एक्सप्लेन कर दें. Convert the following temperature. Okay. Convert the following temperature to the Celsius scale. Now you have got 300 Kelvin. So what happens? 273 Kelvin, you add it in degree C, then it will become. So what happens? You minus is 273, then you will get the degree C. When 10 degrees C, you add it 273, then it will convert into Kelvin. So if it is a Kelvin, minus it. So answer will be first case 27 degree C. 300 minus 273. So it will become 27 degree C. This is the case 573 minus 273. 200 degree C. 573 minus 300 degrees C, sorry. 573 Kelvin minus 273 Kelvin equal to 300 degrees C. So another answer 300 degrees C. Now what is the physical state of matter of water at 250 degrees C? At 250 degrees C, the physical state of water is gaseous state. You know that water is boiling at 100 degrees C. Beyond that, at 100 degrees C. So, B asks question, what is the at 100 degrees C? Water can exist in two states. One at water at 100 degrees C, and another that is liquid at 100 degrees C, and gaseous, that is water vapor at 100 degrees C. So here at 100 degrees C, water has two states, solid state and liquid state both. But here at 250 degrees C, water is only in gaseous state. Now question number 3. For any substance, why does the temperature remain constant during the change in the state? Now let me explain these questions in front of your camera. टेबल की तरफ आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. हमारी तरफ कर दें. Dear student, question says that for any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 9 का. Actually, the energy supplied that is utilized to change in the state. The energy does not get used in rising the temperature. But in question itself, at temperature remain constant, so energy is
is used to change the physical state. What actually happens in that? You know that every state of matter, universe, everything has got the part, it is made up of matter. And these particles are having the kinetic energy. The particles are continuously moving. But when you supply the energy, their kinetic energy increases. And they overcome their binding forces between their molecules. When kinetic energy will be more than the binding forces, then the physical state changes. So, energy is utilized in changing the state. Not that as the temperature remains constant, but energy is used up. Temperature. So the question for any substance, why does the temperature remain constant during the change of the state? It is because the energy is utilized to increase the kinetic energy of the molecule to overcome the binding forces between the molecules so that their physical state can change. Now, suggest a method to liquefy the atmospheric gases. The children, the atmospheric gases, what actually you does it? You increase the pressure, and the gas I have given you the example. When you increase the pressure, you are not doing, you are decreasing the space between the molecules. When molecular space is decreasing, by increasing the pressure, the gas liquefies. In addition to that, we decrease the temperature also, so that by decreasing the temperature, kinetic energy also can decrease. So liquefaction is possible. So by increasing the temperature and increasing the pressure and decreasing the temperature, we can liquefy the gas. Now another questions. We discussed regarding evaporation. एक कंफ्यूजन तुम्हारे ब्रेन में ये होगा, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, a liquid boils. The temperature at which a liquid boils is called its boiling point. दूसरे वे में और तुम समझना चाहो, उसे ऐसा समझ सकते, तुम एक लिक्विड हो और बैठे हुए तुम्हारे सर पे हम वजन दे रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, और तुम उठने की कोशिश करो, वो तब तक नहीं उठोगे जब तुम्हारे द्वारा अप्लाइड प्रेशर और मेरे द्वारा अप्लाइड लोड दोनों बराबर नहीं होगा. जब दोनों बराबर हो जाएगा तो तुम उठ जाओगे, नहीं तो तुम बैठे रहोगे. जब हमने जो लोड तुम्हारे ऊपर अप्लाई किया और तुम उठने लगे और उठ गए, उस समय हम दोनों का लोड अपोजिंग फोर्स इक्वल था. It is the temperature at which another, what is the boiling point? The temperature at which atmospheric pressure becomes equal to the vapor pressure of the liquid is known as its boiling point. When atmospheric pressure, जैसे मैंने दबाया तो वो atmospheric pressure, it is the, तुम जब उठने की कोशिश किए तो तुम vapor pressure थे. So when atmospheric pressure, the temperature at which atmospheric pressure become equal to the vapor pressure, then it is a boiling point, called a boiling point. Or the temperature at which liquid. Now अब लेकिन क्वेश्चन है, या evaporation क्या है? Evaporation में liquid is getting converted into the vapor phase without attaining the boiling point. दोनों केस में लिक्विड वेपर में बदलता है, वो बॉइलिंग में भी और इवोपरेशन में भी. लेकिन in the case of evaporation, liquid is converted into the vapor phase without attaining its boiling point. At any temperature, every liquid undergoes evaporation below its boiling point. So what is evaporation? It is a process of converting of liquid into its vapor phase below its boiling point. Is known as evaporation. It is a conversion of liquid into vapor
below its boiling point is known as evaporation. Now, actually how evaporation is taking place? Now let's try to understand the concept. I am giving you the small diagram and now try to understand it. देखो बच्चों, जब हम किसी भी कंटेनर में पानी को रख देते हैं, if I am keeping the water in a container and leaving for a week or for a day or two, when we go back and see, water is lost. What happens to the water molecules? We have not undergone for boiling. मैंने वाटर को बॉइल नहीं किया, फिर भी मेरा वाटर कहाँ गया? एक्चुअली होता क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेशन करते रहते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के बिलो भी, और ये हमेशा करते हैं। नतीजा वाटर एटमॉस्फेयर में लॉस होता है। लेकिन ये कैसे वाटर इवोपरेशन होता है, हम इस पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। हम इसका सेक्शनल व्यू भी बता रहे हैं। जब ऊपर से तुम देखोगे तो ये तुम्हें पानी का बर्तन इस तरह से दिखेगा और ये साइड से देख रहे हो। अब तुम्हें मालूम है कि ये लिक्विड है और इवोपरेशन हमें एक्सप्लेन on the molecular basis. I told you that every liquid molecule has got their kinetic energy. They continue to vibrate. They vibrate on its place. They vibrate like this. वो अपने ही जगह पर वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे नहीं घूमता। लिक्विड वाइब्रेट करता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से वाइब्रेट करता है। ध्यान रहे, don't go for all YouTube lectures. Lot many lectures we have seen that they are telling the molecules are moving like this. No, it is vibrating on its path. So now see, अब इसमें होता क्या है? इसके पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल इधर धक्के देता है, दूसरा इधर देता है, नीचे वाला इसको धक्के देता है, ऊपर वाला। हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्राइक करता है। हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्राइक करेगा। हर मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल है तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। हर मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से अपोजिंग फोर्स लग रहा है। लेकिन एक पॉइंट है जो तुम बताओ, यहां पर लिक्विड और गैस, यहां गैस है और यहां लिक्विड है। इस मॉलिक्यूल पर एक फोर्स इधर से स्ट्राइक किया, दूसरा मॉलिक्यूल इधर से किया, तीसरा इधर से किया, तो मॉलिक्यूल कहां जाएगा? ये बैलेंस नहीं है, इधर चला जाएगा। यहां पर सरफेस में इधर से स्ट्राइक, इधर से स्ट्राइक, इधर से दिए, इधर चला जाएगा। इस मॉलिक्यूल को देखो, इधर से स्ट्राइक किया, इधर से स्ट्राइक किया, नीचे से स्ट्राइक किया, ऊपर गैसियस मीडियम है इसलिए मॉलिक्यूल ऐसे चला जाएगा। तो एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये काइनेटिक एनर्जी के कारण when we have supplied, so every molecule start vibrating more, and upper surface of the liquid evaporation takes place at upper surface of the liquid. So what happens? इस upper surface से liquid का evaporation होगा हर जगह से। यहां से लिक्विड का इवोपरेशन होगा। सो क्या होता है कि नीचे के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और एक मॉलिक्यूल दूसरे को धक्का देता है। लेकिन अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड जो है वो मॉलिक्यूल उस काइनेटिक एनर्जी के कारण अपनी बाइंडिंग फोर्स से ज्यादा एनर्जी गेन कर लेता है और वो एस्केप कर जाता है एयर में। एयर में ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम है, सो इस ह्यूमिडिटी को पूरा करता है, वो इसमें इन कर जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब रेट ऑफ इवोपरेशन, ये इवोपरेट करता है। दिस इज एक्चुअल फिनोमेना ऑफ इवोपरेशन। नाउ जितना, अब व्हाट आर द फैक्टर ऑन व्हिच द इवोपरेशन डिपेंड्स? रेट ऑफ इवोपरेशन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पर।
What are the question है? What are the factors? What are the factors at which the rate of evaporation depends अब देखो वो कौन सा फैक्टर है जिस पर रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स करता है, जरा इसे समझने की कोशिश करो। एक ग्लास में हमने पानी रखा, सेम अमाउंट ऑफ पानी को हमने थाली में फैला दिया और दोनों को खिड़की पर छोड़ दो। कौन सा पानी पहले इवापोरेट कर जाएगा 2 दिन बाद देखोगे तो प्लेट वाला पानी पहले इवापोरेट कर जाएगा। सो इसका मतलब इफ सरफेस एरिया इज मोर, रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर। इफ सरफेस एरिया इज मोर, द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर। पहला जैसा सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया पर ही इवापोरेशन होगा। अगर उसी पानी को एक बोतल में डाल दे, खुला ढक्कन खोल के छोड़ दे, इवापोरेशन सबसे कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया काफी छोटा हो जाएगा। लेकिन चलो डे टू डे एग्जांपल्स लेते हैं। तुम कपड़े सुखाने के लिए जाते हो, वेट क्लॉथ को तुम फैला देते हो। व्हाई डोंट यू compress the cloth and keep it like that? No, because rate of evaporation will be less, cloth will take more time to dry. So you spread the cloth and leave it so that cloth will dry faster. क्योंकि वहां एरिया बढ़ गया इसलिए इवापोरेशन अधिक हुआ, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में ज्यादा निकला। वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप टू द एटमॉस्फेयर। हाँ, ये क्वेश्चन में बात कहूंगा कि वो कौन सा साइंटिफिक, वो कौन सा कारण है जिसके कारण ड्यू टू दैट क्लॉथ गेट ड्राई। ये आंसर फिजिक्स भी करता है और यही आंसर केमिस्ट्री भी करता है। जब क्लॉथ को हम स्प्रेड करते हैं और क्लॉथ को हम उठाते हैं और जर्क देते हैं, जर्क करने में वाटर क्लॉथ से बाहर निकलता है। हमने भीगे क्लॉथ को उठाया और ऐसे जर्क किया। मेरा पर्पस वहां पर उसके दोनों केस कपड़े सुखाने का ही है। जब हम जर्क देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स में कपड़े में हमने काइनेटिक एनर्जी दिया और सडनली बैक कर दिया। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, लेकिन उसमें जो पानी प्रेजेंट था वो काइनेटिक एनर्जी में ही रह गया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड वाटर सेपरेट हो गया कपड़े से। तो ये पार्ट था। लेकिन दूसरा, हम उसे स्प्रेड करके इसलिए करते हैं सरफेस एरिया मोर होगा, इवापोरेशन अधिक होगा, सो दैट क्लॉथ विल ड्राई फास्टर। वी विल डिस्कस मोर पॉइंट्स। सरफेस एरिया, we will discuss another. Temperature, if temperature is more, then also if the temperature is more, then also cloth get the rate of evaporation is faster. But we will discuss in coming class. Okay, thank you. We will meet in the next class. Please pay attention, go to the study. Thank you.